के साथ अगर हैबिट आपकी शुरू से है तो आपने बी यूज टू यूज़ करना है, लेकिन अगर आपने इवेंचुअली अपने प्रोग्रेसिवली इसको एक्वायर किया है, यू बिकम समथिंग इन प्रैक्टिस ऑफ सच थिंग, तो दैट इसमें आपने गेट यूज टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। इसको फर्दर क्लियर करते हैं विद सम एग्जांपल्स। द प्रोग्राम डायरेक्टर यूज टू राइट हिज ओन लेटर्स। अगर आप इसको फोकस से देखें तो इसमें हमारे पास कोई बी मौजूद नहीं है, कोई गेट मौजूद नहीं है। दिस इज जस्ट प्लेन यूज टू फॉलोड बाय सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब, सो दिस इज पास्ट टाइम हैबिट। सो द प्रोग्राम डायरेक्टर previously supposedly write to his own letters. Second example says George is used to eating at 7 p.m. So this is something George is accustomed all his life that he eats his meal, rightly so dinner, at 7 p.m. We got used to cooking our own food when we had to live alone. So again इसमें आपके पास got की phrase के साथ used to है, or this followed by a verb which is in ing or gerund form. So that is something that it was not something he used to do all his life. He eventually become accustomed to it because he got a chance or he had to live by himself. So as a result he acquired this characteristic to cook his own food. तो जो चीज़ आपके पास शुरू से है, आपके पास है, आपकी हैबिट, दैट विल बी विद बी वर्ब के साथ यूज टू, एंड समथिंग यू एक्वायर प्रोग्रेसिवली विथ टाइम, दैट विल बी गेट यूज टू. Further more examples we say, first Mary was used to driving to school. Again he is accustomed to, he's always been driving himself to school, so regardless it doesn't matter. Second example, the government used to restrict these pills. This is simple past tense habit, maybe they not necessarily need to do it any further. And final example is the man is used to reading his newspapers in the morning, that eventually for some odd reasons or whatever reason maybe he became accustomed